बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। वेरी वेलकम इन ए स्पेशल एपिसोड ऑफ बीट स्पेशल। नाज़रीन, पाँव हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिनमें अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। फुट एंड एंकल डिफॉर्मेशन है क्या, आज इस एपिसोड में बात करेंगे। और आज इस एपिसोड में स्पेशल ये है कि हमारे साथ जो डॉक्टर मार्क मौजूद होंगे, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं फुट एंड एंकल ऑर्थोपेडी में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ घुर्की हॉस्पिटल के उस वार्ड में जहाँ पर फुट एंड एंकल की जो माइनर और मेजर सर्जरीज होती हैं उसके पेशेंट्स मौजूद हैं। ये प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, बाय बर्थ होती हैं, जेनेटिक होती हैं, या फिर किसी चीज़ की कमी की वजह से होती हैं, ये सारी सिचुएशन पर आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा थोड़े से पाँव की डिफॉर्मेशन के साथ पैदा होता है, उसकी टांगें टेढ़ी होती हैं या फिर हाथों में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो किस किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं, और अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो वो बच्चा किस तरह से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकता है। मिथ्स भी आपने सुने होंगे कि बच्चे के अगर पाँव टेढ़े हैं तो कहा जाता है कि इसे गिरहन लग गया है, ये भी कहा जाता है कि इसमें किसी मिनरल्स की कमी होगी। इसी तरह से बहुत से मिथ्स मौजूद हैं, लेकिन हकीकत क्या है। और ये जो माइनर सर्जरीज के जरिए इन बच्चों को, बड़ों को, इवन अगर आपकी एज 10 to 12 तक भी पहुंच गई है, तो ये माइनर सर्जरीज के जरिए ये जो डिफॉर्मिटीज हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे साथ इस वक्त कुछ पेशेंट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जिस वार्ड में मौजूद हूँ यहाँ पर तकरीबन तमाम पेशेंट्स फुट एंड एंकल सर्जरी के लिए ही मौजूद हैं, और कुछ की सर्जरी हो रही है और कुछ जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ट्रीटमेंट के क्या जो है वो तरीकेकार है। तो हम पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आसिया। अच्छा आसिया, मुझे ये बताएं कि क्या डिफॉर्मेशन थी और आपकी सर्जरी हो गई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखने वालों को, आपसे बात करने का मकसद ये है कि देखने वालों को मैसेज दें कि मिसाल के तौर पर जब बच्चे छोटे पैदा होते हैं, छोटी सी कोई डिफॉर्मेशन होती है तो इग्नोर कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेगा। और आपके इर्द गिर्द भी बहुत सी मिसालें ऐसी होंगी, तो अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करें। सर्जरी अभी मेरी होनी है, अभी हुई है। अच्छा। छोटे होते आफ्टर मतलब बर्थ में बीमार हो गई थी, तो उसकी वजह से मुझे ना ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन छोटे होते मुझे इतना नहीं था, थोड़ा बहुत अम्मी अबू ने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, लेकिन इतना पेन नहीं होता था। तो लेकिन अब जब मेरी शादी हुई है, शादी की वजह से एज वाइज ज़्यादा होती गई है, तो मसल्स का खिंचाव वगैरह इसकी वजह से ना, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना अंगूठा टेढ़ा ज़्यादा होना शुरू हो गया, पेन होती है, स्वेलिंग भी हो जाती है पाँव के अंगूठे में ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उस वजह से अब मुझे ना मुश्किल हो रही थी, तो इस वजह से फिर मेरे कज़न है, उन्होंने फिर यहाँ का मुझे गुर्की हॉस्पिटल का। कहाँ से आई हैं आप? मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आई हैं। यहाँ का किसी ने बताया था? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, अगर कोई ऐसा मसला होता है तो कहते हैं अब इसी के साथ रहना है। जी, पहले फैसलाबाद में मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब ऑपरेट हम कर देंगे, लेकिन वो श्योर नहीं थे, कह रहे मे बी आपका ऑपरेशन के बाद दोबारा से आपका अंगूठा फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा मसल्स के खिंचाव की वजह से। तो इस वजह से फिर मैंने इग्नोर कर दिया कि फ़ायदा क्या हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था मे बी कि आप चलने से भी रह जाओ। अच्छा, ये डरा दिया जाता है कि पता नहीं आपका पाँव ही ना ख़त्म हो जाए, कट जाए, इस तरह की भी डर खौफ होता है ना जहन में। जी। तो उस वजह से फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अगर तो वो गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर तो मुझे पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका इलाज करवा लूँगा। लेकिन अगर मे बी आप इससे भी रह जाओगे, तो अपने घरेलू कामकाज बच्चों को संभालना, उससे भी रह जाओगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से फिर हमने इरादा कैंसिल कर दिया कि हम नहीं ऑपरेट करवाएंगे। तो फिर मेरे कज़न है यहाँ डॉक्टर नरेश शकूर, फिर उनको मैंने चेकअप करवाया, तो उन्होंने मुझे यहाँ हॉस्पिटल का कहा कि आप यहाँ आ जाएँ, तो ये ऑपरेट के ज़रिए आपका ये प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और शिफा दे। बिल्कुल आप यहाँ पर तक पहुँच गए हैं तो आगे भी इंशाल्लाह जो है वो मसले का हल होगा। कुछ और पेशेंट्स से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए और उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। फुट एंड एंकल डिफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो ये डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी। बाय बर्थ भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं उस तरह भी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ और पेशेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। छोटे बच्चों में जब ये बाय बर्थ एक प्रॉब्लम आती है तो जल्दी पता नहीं चलता। आपका नाम क्या है? आइश फातिमा। आइश फातिमा, आपको पता है आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ। अच्छा, आप ठीक चल लेती हैं? मसला क्या आता है? चलने में मसला आता है, पेन होती है, क्या इशू आता है? चलने में कोई मसला नहीं है। सही नहीं चल। चलते हुए टेढ़ा चलती हैं, सीधा चलती हैं? टेढ़ा। अच्छा, ये बताएं कि कब पता चला? आप सर, आप साथ बैठे, वालिद हैं आप? हाँ,
क्योंकि बच्ची मुझे लग रहा है घबरा रही है। ये बताइएगा प्रॉब्लम क्या थी, कैसे डिटेक्ट हुई, कितनी एज में पता चला कि प्रॉब्लम है? क्योंकि आपसे बात करने का मकसद ये है कि हम देखने वालों को बता सकें कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसको हल कैसे किया जा सकता है। तो अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब्दुल वाहिद नाम है, राजनपुर से आया हूँ। ये मेरी बच्ची है आयशा फातिमा, ये पहले छत से गिरी थी, उसका फिर उसके बाद जो ना प्लास्टर हुआ था, वो कुछ अरसे के बाद पाँव टेढ़ा हो गया। उसके बाद इसका ऑपरेशन हुआ एक छोटा सा, उसके बाद 1.5 साल के बाद दोबारा टेढ़ा हो गया। तो अब अच्छा, यानी ये बाय बर्थ नहीं था? ये इसका एक्सीडेंट हुआ था, छत से गिरी। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद हुआ था। तो उसके बाद जो है ना अब इसका इन लोगों ने हमें बुलाया है, ये अच्छे लोग हैं। हमें काफ़ी डॉक्टरों के पास हम गए हैं, वो काफ़ी इलाज के लिए महंगा बता रहे थे। तो यहाँ पे आए हैं, इनकी मेहरबानी है। ये लोग जो है ना आसानी से बल्कि ईजी ये मुफ्त में करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। इनको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आयशा फातिमा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, घबराना नहीं है। और ज़रा बता दें देखने वालों को भी कि घबराना नहीं है, कोई मसला है तो आके अपना इलाज कराएं। बता दें बेटा, बता दें। डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं बता दें। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल हम गुड लक कहते हैं। और कुछ और पेशेंट्स से बात करते हैं कि फुट एंड एंकल में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरीज आती हैं, कुछ बाय बर्थ होती हैं और कुछ जो है वो एक्सीडेंट के बाद डेवलप हो सकती हैं और कुछ जो है वो एज बढ़ने के साथ साथ सामने आती हैं। तो कुछ और पेशेंट्स से बात करते हैं, कुछ और पेशेंट्स से बात कर लेते हैं और जो कि इसी तरह से एंकल एंड फुट डिफॉर्मिटी के साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनका एक ऑपरेट हो चुका है जो कि अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हो सका। अब जो है वो इनको टेक ओवर किया यहाँ गुरकी हॉस्पिटल की जो ऑर्थोपेडिक की टीम है उन्होंने। तो बात कर लेते हैं, बताइएगा पहले जो ऑपरेशन हुआ था, नाम क्या आपका? सोनिया। अच्छा सोनिया, जो पहले ऑपरेशन हुआ था उसमें कितना टाइम लगा था, कहाँ से करवाया था, मसला कहाँ पर आया? अच्छा आप बात करेंगे? मुल्तान निश्तर अस्पताल से कराया था। अच्छा, तो ये मसला क्यों हुआ, ठीक क्यों नहीं हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से ये टूटा था। अच्छा, वहाँ से मतलब उधर मुल्तान निश्तर अस्पताल में इनका ऑपरेशन हुआ था। अब वो ठीक नहीं हुआ, ये नहीं चल सकती। 4 साल पहले कुछ बेहतर थी, अब नहीं चल सकती। तो इसलिए हमने इंडस हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में शुरू किया। वहाँ से उन्होंने इधर भेजा है और हम यहाँ आ गए हैं इनके लिए। तो कितना आप लोग मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए होंगे और जाके चेक कराने की कोशिश की होगी, फिर लोग ये भी कहते हैं अब ये ऐसे ही रहेगा, इस तरह बहुत जगह पे गया है, बहुत पर विक्टोरिया में भी दिखाया है और भी बहुत सारी जगहों पे। हमारे अपने इलाके में भी बहुत अच्छा। तो जवाब क्या मिलता था? जवाब यही मिलता था कि ये हमारे बस में नहीं है। अच्छा, इसका बाहर से कराएं इलाज? हाँ जी, या अगर बना सकते तो निश्तर वाले बना सकते थे, अब उनसे नहीं हो सका तो हम कैसे बना सकते। ठीक 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 ठीक। इसलिए हमें कुछ लोगों ने बताया कि जो मुजफ्फरगढ़ में इंडस हॉस्पिटल है वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाए। हम वहाँ गए, उन्होंने देखा, टेस्ट वगैरह किया, सब कुछ कर यहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमने वेट किया, अभी उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और हम इधर आए। ये डॉक्टर मार्क से चेकअप के लिए आप लोग आए, राइट? जी बिल्कुल। प्रॉब्लम्स सिर्फ इतनी नहीं है कि जो प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, बल्कि ट्रीटमेंट भी जो है वो अक्सर हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ जो पेशेंट्स हैं वो परेशान होते हैं, उनके लवाहिकीन, बल्कि डॉक्टर्स भी जो है वो समटाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं कि ट्रीट नहीं कर पाते। इस वक्त मेरे साथ जो है वो इस वार्ड के को जो इंचार्ज के तौर पर देख रहे हैं डॉक्टर उमर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं यहाँ पर जो है वो गुरकी हॉस्पिटल में ही इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो बताइएगा कि ज़्यादातर किस किस्म के पेशेंट्स आते हैं और हमारे यहाँ क्यों इलाज मुमकिन नहीं है, हमें बाहर से ही क्यों जाके इलाज करवाना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़हीम है, मैं रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। आमिर अजीज़ साहब हमारे मेंटर, हमारे लीडर, उनकी लीडरशिप में। देखिए, जो पेशेंट्स होते हैं फुट एंड एंकल वाले, सबसे पहले समझने की बात है कि ये जो पेशेंट्स हैं बहुत निगलेक्टेड होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है फुट एंड एंकल की करेक्शंस करने का, और ये चीज़ें अक्सर निगलेक्टेड जाती हैं। राइट। ये अल्हम्दुलिल्लाह आमिर साहब की लीडरशिप में 3rd फुट एंड एंकल वीक हम कंडक्ट करने जा रहे हैं अभी। और मार्क मायसन साहब आते हैं, अमेरिका से स्पेशल आते हैं।
इन पेशेंट की सिलेक्शन इस तरह होती है कि जो डिफरेंट एरिया से हैं, अगर आप यहाँ पे देखें आपको पाकिस्तान के हर कोने से पेशेंट मिलेगा, आपको बलूचिस्तान से मिलेगा, आपको पेशावर से मिलेगा, आपको सिंध से मिलेगा, आपको पंजाब के डिफरेंट एरिया से मिलेगा। ये हमारे पास डिफरेंट जो एरिया से फिल्टर होकर पेशेंट्स आते हैं, हम इनका चेकअप करते हैं और इनके साथ साथ इनकी वीडियोज़ और पिक्चर्स और एक्सरेज हम शेयर करते रहते हैं डॉक्टर मार्क मायरसन से। राइट। और जो कि एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट जो होती हैं डिफॉर्मिटीज़, उनकी करेक्शन के लिए हम पेशेंट सेलेक्ट करते हैं। अब अक्सर हमारे पास पेशेंट जो आते हैं वो अफोर्डिंग नहीं होते, तो आमिर साहब की लीडरशिप में अगेन हम इन पेशेंट्स का इलाज टोटली फ्री कर रहे हैं। अक्सर आप मरीज़ यहाँ पे आप वार्ड में घूम लें, अक्सर मरीज़ों का इलाज फ्री हो रहा है, A to Z जो भी इनकी अद्वियात लग रही हैं सब फ्री हो रहा है। और जो इनको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर मिल रही है, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर मार्क मायरसन अभी आए हैं, उन्होंने सारे पेशेंट्स का मुआयना किया है, कल भी मुआयना हुआ, आज भी मुआयना हुआ और आज चलता रहेगा मुआयना, और उसके बाद कल से हम इंशाल्लाह इनकी सर्जरी स्टार्ट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। और अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट लेवल पर लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ सर्जन्स की ट्रेनिंग हो रही है। ब्रेक लेंगे यहाँ पर और फिर आपकी जो मुलाकात कराएंगे डॉक्टर मार्क मायरसन से, जो कि यहाँ पर स्पेशली क्योंकि हॉस्पिटल में आया और पाकिस्तानियों के साथ जो उनका एक ताल्लुक बना है, पाकिस्तान आने के बाद जो पाकिस्तानियों के दर्द को उन्होंने महसूस किया, वो यहाँ पर आके वॉलंटियरली ना सिर्फ सर्जन्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं बल्कि जो सीवियर किस्म के पेशेंट्स हैं उनकी सर्जरी में भी खुद जो है वो हेल्प आउट करते हैं। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर मार्क से। Today we have a special guest with us. He is an orthopedic surgeon, Dr. Mark मायरसन, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, साउथ एशिया बेस्ड जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। फुट एंड एंकल की जो इंजरीज हैं और जो डिफॉर्मेशन है उसको स्पेशली डील करते हैं, रिसर्चर हैं और पूरी दुनिया में एक नेटवर्किंग कर रहे हैं कि जो फुट एंड एंकल इंजरीज हैं उनको किस तरह से मिलकर दुनिया भर के सर्जन्स ट्रीट कर सकते हैं। सो डॉक्टर मार्क, आई हार्टली वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ नेबात मीडिया नेटवर्क। थैंक्स फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। You are in Pakistan, you are currently working with orthopedic surgeons and you are just visiting our methodologies, research, you are observing all this. So how would you like to explain our methodology, our orthopedic system? So I am the director of a global humanitarian organization, and we travel around the world educating orthopedic surgeons, teaching them the techniques of surgery in the foot and ankle, and at the same time performing very difficult surgeries, mostly on children who have severe disabling deformities. Now, I have worked in more than 80 countries, and Pakistan is one of them. We like to think sometimes that we chose to come to Pakistan, but in truth, Pakistan chose us. Right. And we made Pakistan one of the countries for our work. Yes. So, in Pakistan, we have many patients with deformation, especially in children by birth, and we also have adult with injuries, sometime internal, sometime external. So, in the department of orthopedical research, what do you think? Where are we lacking in research methodology, in technical education, in research, or in you can say in training of our surgeons? Where are we lacking? So, my experience here is that there is a huge volume of surgery being done at Gurki Trust Hospital. Enormous volume. The surgeons I have seen are excellent, excellent. When we first came to this country, this particular specialty of foot and ankle deformity correction was not one of the specialties in this country that had emerged. Foot and ankle was one of the last
orthopedic specialties to become a separate focus for orthopedic surgeons, so that even though they had good knowledge and very good hands and experience as surgeons, there was a lot of room for the younger surgeons to learn some of these techniques that we have developed. So, do you think that we need to focus on recognition method, or we need to just recognize the injury? Or, for example, if you have a newborn baby, we can't initially recognize him. That's why we are not ready to consult a doctor or surgeon. So there are many types of deformities in childhood. Those that occur at birth, those that become more progressive as the child gets a little older, and then those that start and develop at a young age. They're all slightly different. Sometimes these conditions are present at birth, but you don't see the problem emerging until the child is a little bit older, when the muscles stop working, where the joints in the foot stop working. We know that here there seems to me to be a very, very high incidence of birth defects, birth problems. I don't know what the statistics are here, but my impression is that there are many, many children who need treatment, many. Exactly. And if you then say, well, why do they need treatment? Is it because there are so many children who require treatment, or is it because that there are not enough surgeons to treat the problems? And I think it's a bit of both. This specialty of foot and ankle is emerging, and as it's emerging, the doctors are becoming more familiar with the treatment. So, is there any way to control this sort of deformation before birth by using any? No. There's no way to control these deformities prior to birth. We are able to do surgery if you have a deformity at birth, and you can see it. There are some conditions that you're born, for example, a club foot, where the foot is twisted inwards. Those children, we can operate on them at a very, very young age. But there's no way to prevent it. That might come in the future with genetic manipulation and diagnosis of the condition before the child is born. But for most of these, we treat after birth. It's currently not possible to anticipate it. So, do you think that we need to make a liaison worldwide, not only in Pakistan, South Africa, or in Asia? We need to build a liaison worldwide to share research methodologies of this foot and ankle deformations? So, I don't look at it that way, because the research and the methodology is always available just by reading a book, reading a journal. That's not enough. You need practical, hands-on experience to do the surgery. The other thing is decision-making. You can read as much as you want on research, but the practical, common sense decision-making is really more important. And sometimes if you don't have the experience with the foot and ankle, then you need educators guiding the surgeons in these treatments. So, in Gurki Hospital, you are available as a researcher or as a guider or as a trainer. Would you like to collaborate at government level or to globally? Yes. I think that from Gurki Hospital we can learn a few things.
the surgeons who are here and who have been trained here and are now adult surgeons, they are unbelievably good surgeons. But that's We just can a utilize them as a trainer of trainers. But in order to utilize them, they also need some training. So it begins with a good education program of the surgeons. As their knowledge and feel for the problem increases, you then expand your knowledge to the whole country. But there has to be a center. So most definitely, with government support, this could be an amazing change for the country. To bring government support to this hospital as a center for foot and ankle reconstruction. So my role, as I see it, is as an educator. Once you then train your surgeons here, they need support from the government to bring it about. This was all about the training of surgeons, researchers, or our medical staff. What about, or if you have any observation or research on the aptitude of people, as people are not ready to have a minor, major surgery of their children. So how can we change that aptitude? Yes. So we see this all over the world. It's very common that among certain people, they are reluctant to have any surgery as adults or as children. That parents do not want their children to undergo surgery. That is a cultural attitude that is not unique to Pakistan. We see this everywhere in the world. So it's simply a matter of good communication with the parents when you're treating children, what to expect. I think that the bigger problem is for patients who are living in more remote parts of this country, so that they know that something is available for them here at Gurki Trust. For example, sometimes children have a deformity and they are told by a local doctor, I'm sorry, there's nothing that can be done for you. Now the parents and continue, and the child grows up not knowing that there actually can be something that's done, because that's what they've been told when the child was very young. And they are supposed to believe that doctor because he is a doctor. Yes, and that attitude needs to change, and the only way you can change that is through the media, because these doctors do not have sufficient outreach to be able to reach all of these communities. It's the role of the media to be able to share this information with all the people in this country. So what about technology? Do we need a new technology to change these methodologies or surgeries, or to conduct easy surgeries? To a limited extent. Okay. Technology, you're talking about material, the types of implants, not so much machines, but the type of plates and screws that we use for the foot. Okay. Those here are still fairly basic. But what these doctors are able to do, which is unique, I've never seen this anywhere in the world, is if I give them an idea or show them a photograph of a particular implant, they can have it made. That is unique, and they have it made at a very, very low cost as well. So that's important, because cost of implants is a major factor. Exactly. So if they have the knowledge of what needs to be done, what implant you use, what you need, they can do it. They can do it. Yes. So another question I personally want to ask that, do you think that these deformities are also caused by some deficiencies of minerals like folic acid? We used to hear that infant has a deficiency of folic acid or calcium or something else, and when they grow up they just become deformed. Actually, no. The majority of the birth defects of the foot and ankle, or those that develop at a later age, are
imagine that you wired that way. You cannot change that. It's not caused by mineral deficiency or chemical deficiency. Right. It's caused by a genetic problem that you're born with. Of course, in the future, this applies to delivery of medicine in the West and in Asia. Maybe with genetic manipulation, we're able to find the gene that causes a particular problem. But at the present time, I can tell you it's not caused by vitamin D deficiency, by calcium deficiency or folic acid. That is very, very rare. Rare. So lastly, I just want to ask that is it possible to treat these deformities with some sort of medicine, radiotherapy, or without surgery, something? No. There are of course certain conditions at birth, for example a clubfoot. If that clubfoot is treated correctly, then the likelihood of success is much greater. Unfortunately, what I have seen is that doctors without sufficient experience do the surgery, creating a much more difficult problem to treat. And we see this commonly at Gurki. For example, today we examined many children who have had surgery already unsuccessfully. Now, my goal and my hope is that through education, through government support of Gurki Trust, by expanding our educational platform, that surgeons accept that there are specialists who can correct these deformities and that they should not be tackling everything. Would you like to share some words for Pakistan and your experience in Pakistan or about Yes, of course, I would. People? So, you know, I'm often asked what is my favorite country to work in. Is it Pakistan? And I can tell you without a doubt it is Pakistan. Now, from a standpoint of a surgeon, of course, the deformities that we treat are very difficult, which is challenging, but for me as a surgeon, quite exciting. But it's more than that, it's the people. The people here are so warm, so friendly, so accepting of new ideas. The surgeons here, I consider my friends. It's wonderful when I tell people about Pakistan, and there's such terrible misconception about Pakistan in the world. It's a wonderful country for me as a surgeon to come and learn from the people and share my ideas. That's great. Thank you so much for your time. And Dr. Mark was with us और अपना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. और जैसा कि पाँव यानी फुट एंड एंकल ये एक ऐसा मामला है जो कि हर शख्स की ज़िंदगी में बच्चा हो बड़ा हो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान में मौजूद स्पेशली गुरकी हॉस्पिटल जो कि इनिशिएटिव ले रहा है आगे बढ़कर इस तरह के फॉरेन जो एक्सपीरियंस के साथ सर्जन्स हैं उनका अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर होगा, यहाँ पर डॉक्टर्स ट्रेन होंगे, सर्जन्स ट्रेन होंगे, तो डेफिनेटली ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि छोटी सी कोई इंजरी होती है या फिर किसी बच्चे का पाँव थोड़ा सा टेढ़ा है तो पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली उसको इग्नोर करते हैं और उसी तरह से बच्चे की लाइफ जो है वो चलती रहती है. तो इस तरह की छोटी छोटी डिफॉर्मिटीज अगर ट्रेन हो जाएंगे डॉक्टर्स तो उनको इजीली दूर किया जा सकेगा. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक. नाज़रीन, हमने आपकी मुलाकात करवाई डॉक्टर मार्क मायरसन से जो कि ऑर्थोपेडी और स्पेशली एंकल एंड फुट की सर्जरी को देख रहे हैं. डॉक्टर मार्क इस वक्त जो है वो गुरकी हॉस्पिटल पाकिस्तान में सर्जन्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक लाइजोन क्रिएट किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान में जो फुट एंड एंकल यानी जो डिफॉर्म पाँव और इस तरह से टकने के साथ छोटे बच्चे पैदा होते हैं और या फिर वो बड़े हो जाते हैं, उनकी सर्जरी किस तरह से आसान करके उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल किया जा सकता है. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद जो कि गुरकी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक और स्पेशली फुट एंड एंकल जो सर्जरीज हैं उसको देख रहे हैं. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू दैट कि आप इस तरह से एक फॉरेन जो
क्रीम है, ब्रेन ड्रेन है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान से उमन जाता है, लेकिन आप जो है वो एक फॉरेन क्वालिफाइड सर्जन के जरिए अपने सर्जन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो इसके लिए तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बताइएगा कि अभी हम कहाँ पर हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि एक बच्चा अगर थोड़ी सी टेढ़े पाँव के साथ पैदा हो गया तो वो अपनी सारी जिंदगी वैसे ही गुजार देगा। और कई एक गली मोहल्ले में कोई डॉक्टर या जानने वाला कोई फैमिली में डॉक्टर उसको कहता है इसने नहीं ठीक होना, अब ये ऐसे ही है, तो वो पेरेंट्स भी उसी पे सब्र शुक्र कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अवेयरनेस दी जा सकती है, माइनर सर्जरी के लिए ये जो मसाइल हैं इनको ख़त्म किया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, 2019 में हमने फर्स्ट फुट एंड एंकल वीक इधर कंडक्ट किया था, जिसमें मार्क मैडसन अमेरिका से हमारे पास आए। पूरा हफ्ता एक हमने बहुत हेल्दी प्रोग्राम किया। इसमें हमने इनवाइट किया जितने भी इंटरेस्टेड पाकिस्तान के ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि फुट एंड एंकल में अपने आप को फ्लरिश करना चाहते थे, एक्साइल करना, उनको हमने इनवाइट किया और उनको हमने ट्रेन किया। दिस इज़ द थर्ड प्रोग्राम। तो मार्क मैडसन सेकेंड टाइम आ रहे हैं पाकिस्तान और ही इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 फुट एंड एंकल सर्जन एंड ही वॉज प्रेसिडेंट फुट एंड एंकल सोसाइटी अमेरिका। और बहुत सारी टेक्स्ट बुक के ऑथर हैं, बहुत सारे फुट एंड एंकल के प्रोसीजर ईजाद करने वाले ये हैं। और इस वक्त इनकी अगर बात करें तो पब्लिकेशन जो है 700 से ज़्यादा इनकी पब्लिकेशंस हैं। सो वी आर हैप्पी दैट ही केम टू पाकिस्तान और हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इनके साथ किया। अब थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस की हमने बात की। फुट एंड एंकल के मुतालिक बचपन से सुनते हैं मिथ समझते हैं ना, फॉल्स बिलीव्स। तो मिथ इस तरह के टेढ़े बच्चे पाँव के साथ पैदा होते हैं, टेढ़े पाँव के साथ। तो कोई कहता है चांद ग्रहण लग गया, कोई सूरज ग्रहण लग गया, इस तरह के मिथ्स हैं। बहरहाल अगर हम आज से कुछ साल पीछे चले जाएं, 10 से 15 साल, तो ये टेढ़े पाँव की ट्रीटमेंट जो होती थी ना, सिवियर बहुत सारे डिफॉर्म पाँव, इनकी ट्रीटमेंट सर्जरी होती थी। और अब पिछले 8 से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो इतने अच्छे अच्छे प्रोसीजर डेवलप हो गए हैं कि आपका बच्चा सर्जरी तक पहुंचता ही नहीं है। अगर अर्ली रिकॉग्नाइज हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली पिकिंग अप ऑफ द पैथोलॉजी, और पेशेंट बहुत जल्दी अगर हमारे पास आ जाए तो एक प्रोसीजर होता है, इसको हम कहते हैं पॉन्सेटी टेक्निक ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टर लगाते हैं सिर्फ, लेकिन वीकली चेंज करते हैं प्लास्टर, और 7 से 8 प्लास्टर काफ़ी होते हैं बच्चे, और सिर्फ प्लास्टर से 7 से 8 हफ्तों में बच्चे ठीक हो जाते हैं, चाहे वो डिफॉर्मिटी कितनी मर्जी क्यों ना हो। ये तो हो गया बर्थ प्रॉब्लम। तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस तो मेरा ख्याल आपसे अच्छे मीडिया के से अच्छा कोई इसको लोगों तक डोर टू डोर नहीं पहुंचा सकता। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक अवेयरनेस का कि आप अगर थोड़ा सा यही पॉइंट हाईलाइट कर दें कि इन बच्चों की ट्रीटमेंट अगर अर्ली आ जाए तो बगैर सर्जरी के पॉसिबल है, तो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी नेकी है इस दौर में। बगैर सर्जरी के पॉसिबल है अर्ली रिकग्नाइजेशन। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि होता है, जब तक बच्चा चलना ही नहीं शुरू होता नहीं पता चलेगा कि उसको कोई डिफॉर्मिटी नहीं। देखिए जो टेढ़े पाँव तो पहले दिन से पता चल जाता है, फर्स्ट डे पे। बच्चे तो वैसे भी पाँव इधर उधर नहीं, टेढ़े पाँव जो बहुत डिफॉर्म है फौरन पता चल जाए। जो हिप्स का प्रॉब्लम होता है ना, जो आप बात करें, उसमें होता है कि एक प्रॉब्लम होती है इसमें पैदाइशी तौर पे बच्चों के कूलों के जोड़ निकले होते हैं, डिसलोकेटेड होते हैं। वो आमतौर पे शुरू में नहीं पता चलता, लेकिन रिकमेंडेशन उसके लिए है कि जो भी बच्चा जिस भी हॉस्पिटल में पैदा हो उसकी एक स्क्रीनिंग होती है। तो आप अपने देखा ना, अब किसी भी मॉडर्न हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट को देखती हैं, उसके बाद फौरन उसको पीडियाट्रिशियन बुलाया जाता है। तो जो बच्चों का डॉक्टर उसको देखने आता है, वो उसका काम ही होता है उसको स्क्रीन करना है। तो स्क्रीन क्या करता है, हिप्स को एक खास 2-3 छोटे छोटे मनूवर्स होते हैं, उससे आपको फौरन पता चलता है इसका हिप का प्रॉब्लम है या नहीं। अगर उस वक्त उसको हिप का प्रॉब्लम पता चल जाए, उसकी भी ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, वो भी मोस्टली विदाउट सर्जरी ठीक हो जाता है। अर्ली रिकग्नाइजेशन के बाद तो आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, समटाइम आपका बगैर सर्जरी के प्लास्टर लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल नहीं पता चला, 2 साल 3 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, 10 साल गुजर गए, बच्चा बड़ा हो गया, फिर कोई एडल्ट्स में सर्जरी। देखें आमतौर पे हमारे यहाँ बच्चों के जो प्रॉब्लम, जब चलना बच्चा शुरू करता है, एक तो वो एज होती है, बच्चा थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, फिर पता हो इस तरह शहरों में कम होता है, हमारे देहाती जो पॉपुलेशन उनमें ज़्यादा होता है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तब कहते हैं पेरेंट्स को अवेयर होता है कि इसमें प्रॉब्लम है, उस वक्त हॉस्पिटल लेके आते हैं। नाउ इवन दैट टाइम इज़ नॉट वेरी बैड, उस वक्त भी उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर, लेकिन बात बिगड़ती तब है जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, 8-10 साल का हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है जब 8-10 साल का भी बच्चा हो। अब उसमें ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है,
लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट एज गुड एज इट शुड बी, तो उसमें Right. रिजल्ट्स का प्रॉब्लम होता थैंक है। यू सो मच सर, और हम गुड लक ही कहना चाहेंगे you very कि much, आपने बहुत इतना शुक्रिया। बड़ा इनिशिएटिव लिया, इसको हम पाकिस्तान में यूटिलाइज भी कर सके। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्रोफेसर आमिर अजीज़ का, क्योंकि उनकी मार्क से मुलाकात हुई और इनकी बहुत बड़ी कोलैबोरेशन के साथ मार्क ने फिर आमिर अजीज़ साहब के साथ लाइजॉन किया और आने का हम सोच रहे थे कि वो 2019 में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान के हालात उस वक्त इस तरह थे, लेकिन ही चूज़ टू कम। और माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने खुद आके देखा कि इधर घुरकी में सिचुएशन कैसी है और कितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं जो कि और हॉस्पिटल्स में नहीं हैं, तो ही लव टू वर्क अवे। दैट्स ग्रेट। और Thank you. बिल्कुल डॉक्टर आमिर अजीज़ खुद भी जो है वो एक ज़बरदस्त एज ऑर्थोपेडिक सर्जन पाकिस्तान के नामवर जाने जाते हैं, और ये इनिशिएटिव उनकी जानिब से लिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इनिशिएटिव सिर्फ गुरकी हॉस्पिटल तक नहीं रहेगा, बल्कि गवर्नमेंट लेवल से होता हुआ हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं, यानी आम पब्लिक की एक्सेस भी इस तक हो सकेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।